नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को विद्यासागर क्लासेस चैनल को समस्त को वेलकम। सो आज क्लास रे आम अपकमिंग रीनीट एग्जाम बोली जो टॉपिक्स गुड़ा डिस्कशन करूले सेटा को आज कंटिन्यू करवा जोटा रे कि आमर ऑलमोस्ट प्रायतः 11th क्लास रो पोर्शन रो सब गुड़ा एमसीक्यू डिस्कशन सरी आसलानी एवं नाउ दिस इज द पोर्शन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द क्लास 12th पोर्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन जोटा कि गोटे हाई वेटेज मध्ये कैरी करूची आमर जे कोनोसी एग्जाम रे काहे कि नहीं जाओ बहुत भल वेटेज बहुत भल लेवल रे वेटेज से कैरी करूची तो सेति पई बोली समस्ते जल्दी जल्दी जॉइन हो जाओ सो दैट हमें क्लास आरंभ कर देबा है ना। प्रणाम गुड मॉर्निंग सनातन प्रणाम गुड मॉर्निंग अभिक्षा है ना गुड मॉर्निंग। अच्छा सो बिफोर वी स्टार्ट समस्त टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जेबे सो दैट आफ्टर द क्लास मु ए पीडीएफ तो तमाम साथे शेयर कर देबी ए चैनल रे एंड नॉट ओनली दिस पीडीएफ बाकी हमर जो पूर्वर जति भी सब क्लासेस हो जाई छी सब गुडा पीडीएफ मु सेडा शेयर कर देबी जोडा कि तमाम पे बिल कन्वीनियंट हो रिवीजन करिया पे ओके। अच्छा द फर्स्ट क्वेश्चन आसी गलानी ऑलरेडी स्क्रीन रे हैला फर्स्ट क्वेश्चन on your screen. In the male reproductive system, the pair of glands situated below the urinary bladder that contribute in alkaline secretion rich in citric acid and enzyme to semen are known as कौन हम A bulbourethral gland, B seminal vesicle, C prostate glands, D Cowper's gland. It will be जदि आम ग्लैंड्स गुड़ा कथा कहवा ताले तीनटा एक्सेसरी ग्लैंड अछि in male reproductive system. ये कि फर्स्ट हला a pair of seminal vesicle जोटा कि हमर कोन करछि ना हमर एनर्जी प्रोवाइड करबा पई बोली एनर्जी प्रोवाइड करबा पई बोली से हमर जो जा सिक्रेशंस करे कथा करूछि ता पाखे एंजाइम्स अछि फ्रुक्टोज अछि and other necessary citric acid molecules for better fertilization. है ना नेक्स्ट prostate gland single gland का provide alkaline solution सेमिति किछि यार फंक्शन नहीं किंतु ये गोटे alkaline secretion करूचे जोटा कि lubrication माने better fertilizing ability आनिबा पई बोली ये better help. थर्ड असला तापरे bulbourethral gland एडा मध्ये हमर गोटे पेयर्ड ग्लैंड ता जोड़ा कि लुब्रिकेशन पई बोली हला तो पचारिछि कोन situated below the urinary bladder contribute in alkaline secretion rich in citric acid and enzyme जोड़ा कि हमर seminal vesicle गोटे हला काहे कि समस्त सी कहउछ देखो prostate gland काहे कि हबनी मु कहि दउछि फर्स्ट ऑफ ऑल से कहि छि prostate gland ता हमर सिंगल ग्लैंड ता एडा पर पचारिछि पेयर ऑफ ग्लैंड्स पेयर्ड स्ट्रक्चर ता को पेयर्ड ग्लैंड ता सिया हमर कंट्रीब्यूट करछि अल्कलाइन सेक्रेशन को जोड़ा कि हम सिट्रिक एसिड एंजाइम्स एवडा सब सीमेन रे हमर कंट्रीब्यूट करछि आंसर विल बी सेमिनल वेसिकल हला आंसर विल बी सेमिनल वेसिकल देन मैम व्हाई यूवीटी एग्जाम शिफ्ट ता विषय मु किछि जानि नी तो निखिल राज हला मोर काम करछि आज गोटे मीटिंग रे बसेबी तापर मु डिस्कशन करके तुमको जणाइबी हो ठीक अछि हां गुड मॉर्निंग आर्यन गुड मॉर्निंग।
So chalo next question jiba. Question number 2. During spermatogenesis, the stage at which a primary spermatocyte undergoes the first meiotic division to form two haploid cells is referred to as spermiogenesis, spermiation, reduction division, mitotic proliferation. Primary spermatocyte first meiotic division undergo gala pare dita haploid set of cells produce hoche. से सेल गुड़ा ना कौन से सेल गुड़ा ना मधे से दे देइछि कि हमर दीटा माने हैप्लॉइड सेल जो दीटा प्रोड्यूस करछि सेटा को टाइप ऑफ डिवीजन दा सेटा को टाइप ऑफ डिवीजन दा सेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोस द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन हला देखो फर्स्ट तो स्पर्मेटोगोनियम कथा आसीबो जोड़ा कि हला स्पर्म मदर सेल स्पर्मेटोगोनियम हला तापर ये माइटोसिस होची डिफरेंशिएशन होची तापर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनोची स्पर्मेटोगोनियम रे 2n थिला एडी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मध्ये 2n अछि ठीक अछि तापर meiosis 1 जेमिति हमरा क्वेश्चन रे कहिछि meiosis 1 फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन से अंडरगो कला परे से प्रोड्यूस करिबो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब एटा हेबो n आ meiosis 1 पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दीटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनिबो दीटा n हेगी तापर meiosis 2 रे हैला it will produce spermatids meiosis 2 करिले पुनी तो आउथरे गोटे डिवीजन दे हबो ना तो 1 2 3 4 1 2 3 4 एग्री चारटा सेल हला तापरे ए जो स्टेपटा एटा को हला स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करिवो ओके आ स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस कला बोली कहले ए जो स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ है प्रोसेस टा उही को आगला स्पर्मियोजेनेसिस है ना स्पर्मियोजेनेसिस तो जेहेतु एडी मोरो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ए स्टेप कथा कहिछि फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कथा कहिछि एडी हमरो डिप्लॉइड सेल रो हैप्लॉइड सेल दीरा प्रोड्यूस हैला तो एडा हम कहबा गोटे रिडक्शन डिवीजन बोली है ना गोटे प्रकार रिडक्शन डिवीजन बोली रिडक्शन डिवीजन जो होछि एठी meiosis 1 is known as रिडक्शन डिवीजन काहेंगी काहेंगे हमें meiosis 1 को रिडक्शन डिवीजन होची बोली कहूचे because the separation of homologous chromosomes occurs homologous chromosome separation है बाजगो हला homologous chromosome separation है बाजगो हमें कहूचे एडा जे एडा होचे हमर कारो एडा गोटे रिडक्शन डिवीजन हला एक प्रकार रिडक्शन डिवीजन ठीक गुड मॉर्निंग कल्पना आर्यन वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर हला से विषय पर डिस्कशन करबा क्वेश्चन हमें करबा क्वेश्चन नंबर 3 The seminiferous tubules of testes are lined internally by the cells that provide nourishment and structural support to the developing sperms. These cells are called Leydig cells, Sertoli cells, interstitial cells, follicular cells. Seminiferous tubule internal lining रे को सेल गुड़ा को हमरे एमिति लाइन हेगिरे अछि जोडा कि हमकु स्पर्म गुड़ा को नरिशमेंट प्रोवाइड करछ स्पर्म गुड़ा को नरिशमेंट प्रोवाइड करछ है ना थैंक यू निखिल थैंक यू 33 3 रा बी हैला बी सर्टॉली सेल्स हबो देखो सेमिनिफरस ट्यूबुलर जदि क्रॉस सेक्शन काटी के देखिबा ताले एमिति हमर एक्सटर्नली एमिति लाइन हे गिथिबो के ए जो सेल्स गुड़ा को कोन हबो जर्मिनल एपिथेलियम किछि किछि एमिति एलोंगेटेड सेल्स गुड़ा को थाइ मझे एमिति एलोंगेटेड सेल्स गुड़ा थाइ ए सेल्स गुड़ा को ही कुआ जाउ जे कोन ना सर्टॉली सेल्स करेक्ट एडा भी कुआ जाउ जे सर्टॉली सेल्स या फिर नॉर्थ सेल्स या फिर सस्टेंटाक्युलर सेल्स ठीक अछि अच्छा आ गोटे कोन एडी रहउची देखो ए भितरे माने ता चारि पटे हला इट इज लाइंड बाय Leydig cells ये कौन हेल्प करची
ये हमर एंड्रोजन सीक्रेट करियर हेल्प करछि एंड्रोजन सीक्रेट करियर हेल्प करछि एंड एंड्रोजन इन केस ऑफ द मेल इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन ठीक अछि एडा हला गोटे तापरे नेक्स्ट जिंस हला जो स्पर्म नाम डेवलप करछि ना सी हमर फर्स्ट इमिदी सटोली सेल रो हेड रे इमिदी एम्बेड हेगी रहउछि until it gets mature enough to swim and move out of the seminiferous tube हैला तो वंस एरा हमर मैच्योर हे गला बोली कहले ये तापरे रिलीज हे जाउछि स्पर्म रो हेड रो रिलीज हे जाउछि स्पर्म रो हेड रो तापरे बाहर को बाहर के जाउछि हैला द release of sperm from Sertoli cell ए प्रोसेस रो कोन कुआ गला स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्माटोजेनेसिस ना स्पर्मियोजेनेसिस ना स्पर्मिएशन कोन कुआ जिवो the release of sperm from the Sertoli cells is known as spermiation पुनी हैला it is known as spermiation अच्छा आउडे कोन मते कहले देखो लेडिक सेल्स को हमें ऑरल एरा को इंटरस्टिशियल सेल्स बोली मते कहि डन चलो नेक्स्ट छिबा क्वेश्चन नंबर 4 which of the following hormone primarily stimulates the Leydig cells to synthesize and secrete testosterone in the males oxytocin prolactin luteinizing hormone relaxin मनस्मिता ठीक अछि कोन हो क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमर ना जीएनआरएच द्वारा हाइपोथैलेमस द्वारा रिलीज होतबा हार्मोन टा हैला जीएनआरएच सी जब पिट्यूटरी ऊपर एक्ट करे सी हमर रिलीज करे दीटा हार्मोन गोटे हैला एलएच आ गोटे हैला एफएसएच ठीक अछि एलएच हमर कोन करिवो सी हमर लीड करिवो टू द release of the androgen release of the androgen या फिर एडा को हमें टेस्टोस्टेरोन बोली कहि परिबो हैला टेस्टोस्टेरोन एफएसएच से हम सर्टोली सेल को एड करे सर्टोली सेल्स रो सिंथेसिस रे सी हेल्प ठीक अछि तो एडी हमको पचारला कोन लेडिक सेल्स द्वारा हमर कोन सिंथेसाइज होउची को हार्मोन द्वारा लेडिक सेल ऊपर एक्ट करूची हैला एक्ट करूची आउ टेस्टोस्टेरोन रिलीज करची तो इट विल बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हैला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वॉइस लो अछि एबे एबे ठीक आसला कि पूनम एबे ठीक आसिला लागे से एबे ठीक आस्तिबो देखो क्वेश्चन नंबर 5 in the female reproductive system the funnel shaped terminal part of the fallopian tube bearing finger like projections is termed as cervix infundibulum isthmus ampulla yes okay देखो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबुडार टिके टिके करदबा हमें कौन लेबलिंग है सबुड़ा लेबलिंग करदबा हाँ पूनम अभिप्सा मनस्मिता सनातन ठीक अच्छे देख लेबलिंग टे फटाफट कर दियो ये है ओवरी ओवरी रे होची oogenesis और ovulation ovary is attached to the uterus by ovarian ligament है ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को आगला फिम्ब्री जोटा की कलेक्ट करूची ओवम को ओवरी रो ओवम को कलेक्ट करके रखुची ए जो पूरा पार्टटा ही जाउची एडा हे गेला हमर फैलोपियन ट्यूब या फिर एडा को हमें ओविडक्ट बोली मध्ये कहै
तार तीनटा रीजन अछि द पार्ट क्लोज टू द फिम्ब्री इज नोन एज infundibulum the widest part is known as ampulla या फिर एटा को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बोली मते कहि परिबा हला तापर ए पार्ट जोड़ा कि क्लोज अछि यूट्रस पाखु एटा को कहला isthmus है ना isthmus सेम एपटे मते सेया ही हबो हला किछ अलगा नै तापर यूटेरस लेयर्स कथा जदि देखिबा से तीनटा लेयर रे मेड अप ऑफ गोटे होची कोन आउटर पेरीमेट्रियम मिडिल मायोमेट्रियम तापर इनर इनर लेयर रे कोन अछि इनर लेयर टा हला एंडोमेट्रियम जोड़ा कि ब्लड आ म्यूकस रे मेड अप ब्लड आ म्यूकस रे मेड अप आ जेटा प्रति मास रे ये हमर फॉर्म हबो हला पेरीमेट्रियम यस क्लास केते बेले स्टार्ट हेई छी एबे 15 मिनट्स हला स्टार्ट हेई छी एंडोमेट्रियम हला एंडोमेट्रियम दा होची हमर सी फॉर्म हेबर कारण हला हम प्रोजेस्टेरोन रे सिंथेसिस हे एंडोमेट्रियम लाइनिंग हमर फॉर्म हबो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करला बलिया जदि प्रेगनेंसी हमर रहिबो माने परसिस्ट करबो कंटिन्यू करबो तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग मध्ये कंटिन्यू करबो जदि हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाउची या प्रेगनेंसी हमर आकार न होची ताले एंडोमेट्रियम लाइनिंग मध्ये हमर शेड ऑफ हिजबो एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल हला एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल तापर ये हे गेला हमर सर्विक्स ये हे गेला सर्वाइकल कैनल अब ये हे गेला वजाइना अब ये तीनटा जगह मिसे गेली तीनटा जगह मिसे गेली एटा को जाउची कोन बर्थ कैनल डन डन ये गेला मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो भीतर की ए पोर्शन टा को गला यूटेरस बा वूम WOMB वूम हैला ओके तो ये पचारची कोन टर्मिनल पार्ट ऑफ द फैलोपियन टर्मिनल पार्ट ता जोटा रे की हमर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अछि फैलोपियन ट्यूब टर्मिनल पार्ट रे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अछि फिम्ब्री एडा कहला कोन ना infundibulum करेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 6 The acrosome of the mammalian sperm is derived from which of the cellular organelle during the spermiogenesis? Mitochondria, ribosome, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum. Spermiogenesis जो process टा अछि तेरा हमर कोन कन्वर्ट करछि spermatids को जोड़ा कि haploid cell दा सी हमर पुनी spermatozoa को कन्वर्ट करछि पुनी haploid cell लाइना हला किंतु ए जो स्टेप रे हमर haploid cell एडी जेतरे चारटा स्पर्मेटिड थिला एडी भी चारटा स्पर्मेटिड अछि एडी कोन से भी प्रकार हमर डिवीजन होनी कोन से भी प्रकार हमर रिडक्शन होनी ना इक्वेशनल होची किछि होनी एडरे होची कोन हमर जहां जहां हमर गोटे स्पर्म रे रहिबा दरकार ना जहां जहां जति कंटेंट रे जो जो जिंस हमर रहिबा दरकार ऑर्गेनल फॉर्म रे सेरा हम स्पर्मेटिड रे ऑलरेडी अछि स्पर्मेटिड्स रे ऑलरेडी प्रेजेंट अछि बट द मेन डिफरेंस इज कि एटा हमर प्रॉपर्ली अलाइन हे गिनी प्रॉपर्ली प्लेसमेंट हे गिनी नाही जोथि पई कि हम स्पर्मेटिड ता इमोटाइल थिला बट स्पर्म हमर मोटाइल हे जाउछ तो हमें ए जो स्टेप टा करूचे ए स्टेप टारे हमें एटा को एंश्योर करूचे कि स्पर्मियोजेनेसिस हेगी बा प्रॉपर डिफरेंशिएशन ऑफ द ऑर्गेनल्स हेगी तापरे जागी स्ट्रक्चर टा बनेले से स्ट्रक्चर टा मोटिलिटी देखे काहे कि ना हमर सब जहाज जिंस हमर गोटे स्पर्म पई दरकार से सब जिंस हम स्पर्मेटिड पाखे अछि किंतु गोटे जिंस नथिले से हला मोटिलिटी आ से मोटिलिटी को आनबा पई बोली हमें से ऑर्गेनल्स गुडा को प्रॉपर्ली अलाइन करके रखबा दरकार सेति पई बोली हमर ए स्टेप टा होची स्पर्मियोजेनेसिस आ ए स्पर्मियोजेनेसिस हला टाइम रे सेडा कोन होची ना हमर सी गोल्जी apparatus टा स्पर्म रो हेड रे जागी एक्युमुलेट हो जाउछ स्पर्म रो हेड रे जागी एक्युमुलेट हो जाउछ जा द्वारा कि ए एक्रोसोम रे को एंजाइम अछि एक्रोसोम रे हमें कोचे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अछि जेमिति कि स्पर्म लाइसिन
hyaluronic acid है ना, जोड़ा कि ओवम को पेनिट्रेट करिवारे हेल्प्स इन पेनिट्रेटिंग ओवम, हेल्प्स इन पेनिट्रेटिंग ओवम है ना। तो एटा हे जो आंसर हमर सी, Golgi complex, Golgi complex. Next, question number 7. The uterine wall consists of three layers. The thick muscular middle layer responsible for strong contraction during the childbirth is called. Discussion कर दी चे हमें आप इससे खाली आंसर कर दियो आगे बुझिबा। Zonalizing, corona penetrating enzyme, हाँ, yes, अब विश्व सोडा में है ना, C, yes, quite simple थिला, ठीक अछि। Middle layer टा uterine रो, it is made up of smooth muscles. It is made up of smooth muscles. अब smooth muscles गुड़ा केमिति आता है जे, it is involuntary. आम कंट्रोल रे न थाए। अब ए जो involuntary nature of the smooth muscles, सेइडा ही हमर कोन करछि ना birth time रे contraction create करूछि, contractions create करूछि जोडा कि जनरेट करूछि हमर लिवर पेन, जोडा कि जनरेट करूछि लिवर पेन हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. In oogenesis, the primary oocyte remains arrested in the prophase 1 of the meiosis until fertilization occurs, puberty is attained, implantation takes place, menopause begins. Question number 8. It is B, B, B. Yes, until puberty is attained. ठीक अछि, देखो प्राइमरी oocyte टा हम प्रोफेज 1 रो meiosis 1 रे से arrested हे रहि अछि। meiosis 1 हमर कंप्लीट ही न थाउछि हैला। meiosis 1 रे हमर कंप्लीट ही न थाउछि, काहे कंप्लीट ही न थाउछि बोली कहउछि, because it remains arrested in the prophase 1 of post stage रे arrest होछि, post stage रे arrest होछि कहला देखिबा। प्रोफेज 1 ର କୋ ଷ୍ଟେଜ ରେ, ପ୍ରୋଫେଜ 1 ର ପୁଣି ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ ଅଛି ହେଲା, ଲେପ୍ଟୋଟିନ୍ ଜାଇଗୋଟିନ୍ ପ୍ୟାକିଟିନ୍ ଡିପ୍ଲୋଟିନ୍ ଡାଇଗାନେସିସ୍। ତ ମତେ କୁହ କୋ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଆରେଷ୍ଟ होछि फर्स्ट, तापर जेतेबेले हमर प्यूबर्टी आसुछि ताले एरा हमर पुनी कोन मियोसिस 1 टा कंप्लीट होछि, मियोसिस 1 टा कंप्लीट होछि, मियोसिस 1 टा कंप्लीट हला परे सी हमर गोटे अनइक्वल डिवीजन करूछि, सेल्स रो डिवीजन होछि, अनइक्वल डिवीजन होछि, गोटा सेकेंडरी oocyte को आगला haploid cell ना, आ गोटा कहला फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी एटा मध्ये गोटे haploid cell ना। किंतु ए जो ओवम ना नहीं कि सॉरी ए जो सेकेंडरी oocyte टा नहीं कि सेकेंडरी oocyte टा मध्ये एबे हम मियोसिस 1 करबो, मियोसिस 2 करबो, किंतु सेटा मध्ये अरेस्टेड हे जाय, अरेस्टेड अंटिल फर्टिलाइजेशन, अरेस्टेड अंटिल फर्टिलाइजेशन। पोस्ट स्टेज रे अरेस्टेड हे जाउची मियोसिस 2 रो मेटाफेज 2 रे, मेटाफेज 2 स्टेज रे से अरेस्ट हो जाउची। जदी फर्टिलाइजेशन हुए तो मियोसिस 2 कंप्लीट हबो, ओवम फॉर्म हबो, तापरे फ्यूजन हे जिवो स्पर्म और ओवम रो प्रोन्यूक्लियस रो। और जदी फर्टिलाइजेशन न होची, स्पर्म एंटर न करूची, से केस रे कोन हबो ना ए सेकेंडरी oocyte स्टेज रे रहि गिरी ही से डीजेनरेट कर जिवो, जोटा कि सिग्नल दबो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को टू शट ऑफ, ठीक अछि हला। मियोसिस 1 डिप्लोटिंग स्टेज, यस एरा हमर डिप्लोटिंग स्टेज हबो। हेगला तो एडी पचाजी कोन बी, ऑप्शन नंबर बी हेगला नि 9. Which structure acts as the temporary endocrine gland after ovulation and secretes progesterone necessary for the maintenance of the pregnancy?
C, C, Trupti, Payal, Poonam, C, corpus luteum. Yes. Graphian follicle amar rupture केतेबेले होची 14th day of menstrual cycle. Graphian follicle rupture ହେଇକିରି Graphian follicle rupture ହେଇକିରି से secondary oocyte release कर दଉଛି। ए जो remaining of the corpus Graphian follicle forms a temporary endocrine gland जोड़ा कि corpus luteum बोली कुहागला। फर्स्ट तो गोटे स्ट्रक्चर टे फर्स्ट बनेबो ना जो स्ट्रक्चर टा कि एफिशिएंटली प्रोजेस्टेरोन रिलीज करि पार नथबो इफेक्टिवली हार्मोन्स रिलीज करि पार नथबो सेडा कहले से ग्राफिन फॉलिकल रो फर्स्ट फॉर्म होबो से होला कॉर्पस हेमोरेजिया तापर से जदर फंक्शन ले जबो ना से कॉर्पस ल्यूटियम बनेबो तापर जदि प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुए तो कॉर्पस ल्यूटियम हमर मेंटेन हे कि रहिबो जदि प्रेगनेंसी कंटिन्यू न हुए ताले एटा डीजेनरेट हे जबो डीजेनरेट के को स्ट्रक्चर टा बनेबो the corpus luteum degenerates to form corpus albicans corpus albicans ठीक अछि अब ए जो corpus luteum दा it acts as a temporary endocrine gland and furthermore ये को हार्मोन दा एंडोक्राइन टेम्परेरी काई कहला काई ना पूरा बहुत टाइम जे ये हमर सस्टेन करके रुहेनी आउ एंडोक्राइन एथि पे कहला काई ना ये हार्मोन सिक्रेशन करोछि को हार्मोन रो सिक्रेशन करोछि प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रो सिक्रेशन करोछि आ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ता को कोन कहै जाउछि एटा को ही हमर प्रेगनेंसी हार्मोन बोली कहै जाउछि which helps to maintain pregnancy by maintaining the endometrial lining है ना ठीक है ना clear next the secretion of the fructose rich fluid forming a major proportion of the semen is mainly carried out by the epididymis prostate gland seminal vesicle vas deferens कौन होगा it is C seminal vesicle होगा है ना से fructose rich fluid कथा पचाची और proportion of the semen कथा पचारी कहबा जदी seminal vesicle रो केते contribution रहउची ताले it is around 60 to 65% of the semen consists of the seminal vesicle secretion seminal vesicle secretion प्राय हमर 60 to 65% रे constitute करूची हमर कोडा रे semen next 11 the structure connecting the fetus to the placenta through the blood vessels enclosed in the Wharton's jelly is known as chorionic villus, umbilical cord, Graphian follicle, na allantois. Yes, Rajalakshmi, Santosh, Trupti, Poonam, Abhi, है ना एड़ा सब ही जो कौन umbilical cord. Next, question number 12. During spermatogenesis, spermatids are transformed into mature spermatozoa through a process called capacitation, ovulation, spermiogenesis, cleavage. एड़ा very easy discussion करी चे हमें.
12 C yes 12 ହେଲା spermiogenesis अच्छा कैपेसिटेशन रे कोन होतला कैपेसिटेशन दा कहाटी होतला स्पर्म रे होतला कोडी होतला लोकेशन in the female reproductive tract in the female reproductive tract ହେଲା स्पर्म रे कोन होतला ना स्पर्म रो ऊपर लेयर रे जो हमरो रही होतला प्लाज्मा मेम्ब्रेन दा which is a cholesterol based molecule तार रिमूवल ता सेटा रिमूव हेले जाईगिरी तार फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी दा बढ़िबो आ ए प्रोसेस टा ही कुआ जाउची हमर कैपेसिटेशन जोटा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को एंटर करिला पर स्पर्म रे होची फर्स्ट कैपेसिटेशन रो माने हैला एया ओव्यूलेशन रो माने कोन हैला ओव्यूलेशन रो माने होची द रिलीज ऑफ ओवम एला कहला ओव्यूलेशन फ्रॉम द ओवरी क्लीवेज माने कोन ना फर्टिलाइजेशन पर एग आउ स्पर्म रो फर्टिलाइजेशन हे गला पर तापर से हमर गोटे सिंगल सेल्ड जाइगोट बनउची सिंगल सेल्ड जाइगोट बनउची किंतु से सिंगल सेल्ड जाइगोट रो गोटे जाइगोट रो सेल रो आसी आज के डेट रे हम एते मल्टी सेलुलर एते लेवल रे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो ये जो सिंगल सेल्ड जाइगोट टा कोन होची ना क्लीवेज डिविजन्स करूची क्लीवेज रो डिविजन्स माने ए टाइप रो गोटे रो दीटा सेल दीटा रो चारटा सेल चारटा रो आठटा सेल हैला आठटा रो 16टा सेल आठटा 16टा सेल हैला ए स्टेज टा कोन कहआ जाउची 8 to 16 सेल स्टेज को कोन कहआ जाउची एडा कहआ गला मॉड्यूला हैला मॉड्यूला अच्छा तापर ना मल्टीपल डिविजन्स करी तापर ए टाइप रो गोटे स्ट्रक्चर टा बनउची हैला ए टाइप रो स्ट्रक्चर टा आसी बनउची एडा कहआ गला कोन ना आउटर टा हैला ट्रोपोब्लास्ट सेल हैला मिडिल टा हैला इनर सेल मास आ जो खाली कैविटी टा देखुछ एडा कहआ गला ब्लास्टोसील हैला ब्लास्टोसील ए स्ट्रक्चर टा कहआ जाउची कोन ए स्ट्रक्चर टा कहआ जाउची ब्लास्टोसिस्ट आ कनेक्शन रे जदि हम आ गोटे टर्मिनोलॉजी को बुझिया चेष्टा करिवा ताहले हमें कोन कहि परिबा एडी कहबा इम्प्लांटेशन रो टर्मिनोलॉजी को मते एडी बुझिबा इम्प्लांटेशन रो माने कोन द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट to the endometrial lining ହେଲା implantation ହେଲା ब्लास्टोसिस्ट इनर सेल ठीक अछि आउ ए टाइप रो स्ट्रक्चर हमरो ये फॉर्म होला आसा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 which hormone secreted by the placenta helps in maintaining the pregnancy and suppresses the uterine contraction during the early gestation Thirteen A yes HCG ठीक अछि HCG मैम बासी हैप्पी बर्थडे थैंक यू भास्कर थैंक यू हाउ देखो हम प्लासेंटा कोन रिलीज करतला कि हमरा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन बा HCG हार्मोन रिलीज करतला ठीक अछि HCG हार्मोन जोटा कि हमरा प्रोजेस्टेरोन रो लेवल को मेंटेन करी एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करतला आ एडा ही तो बेस्ट सपोर्ट हम प्रेगनेंसी टाइम बोली हैला एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करूछ अच्छा एंडोमेट्रियल लाइनिंग को जो ये मेंटेन करके रखिला एचसीजी हार्मोन रो प्रेजेंस द्वारा आ एडा ना हमर ट्रोपोब्लास्ट सेल्स प्लासेंटा माने जो ब्लास्टोसिस्ट रो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स रो ही हमर रिलीज बा आरंभ जाउची एथि पई बोली हमें एडा को इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी बोली कहूचे
तापर तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हमर प्लासेंटा टेक ओवर करूची एचसीजी हार्मोन रिलीज करिया पई किंतु इनिशियली हमर ट्रोपोब्लास्ट सेल्स रिलीज करबा जगु as soon as हमर ब्लास्टोसिस्ट टा फॉर्म होउची अटैचमेंट हेबा को जाउची इम्प्लांटेशन देगिरी यूटेराइन वॉल रे सेते बेले ही कहूची ना हमरा एचसीजी रिलीज हबा आरंभ होउची ब्लड रे आ एते मात्रा रिलीज होउची जे सेरा हमर यूरिन रे मते फ्लो आउट हबा आरंभ होउची तो ताकू ही देखि हम जो प्रेगनेंसी किट उडा करे एचसीजी लेवल को देखि करी ही हमें जानू जे प्रेग्नेंट अच्छा कि न अच्छा हैला प्रेगनेंसी हेची कि न हेची नेक्स्ट 14 in the menstrual cycle degeneration of the corpus luteum in the absence of the fertilization results in a sudden decline in the level of insulin and glucagon estrogen and progesterone thyroxine and calcitonin prolactin and oxytocin B B pregnancy test रे helpful हुए B B हैला estrogen and progesterone एटा तो सिंपल थिला डिस्कस किछ करे दरकार नहीं क्वेश्चन नंबर 15 वर्स which of the following structure prevents the polyspermy by undergoing cortical reaction immediately after the sperm entry zona pellucida of the ovum corpus luteum endometrium placenta 14 the B 15 A शिवसुंदर प्रधान A zona pellucida of the ovum रो ना ovum अछि ovum अछि ovum रो चारि पटे गोटे A cellular layer टे अछि A cellular layer टे अछि ए cellular layer टा को कहा गला कोन ना zona pellucida एटा कोनोसी सेल रे मेड अप ऑफ नहीं तो कोनोसी सेल जदी नहीं कोथरे मेड अप ऑफ एटा this is made up of this is made up of glycoproteins this is made up of glycoproteins हैला ए zona pellucida layer ऊपर किछि किछि रिसेप्टर्स बसी थांती हैला ए रिसेप्टर्स उडा कोन को जाउची ZP3 रिसेप्टर्स आ ए रिसेप्टर उडा कोन एंश्योर करची कि सेम स्पीशीज रो स्पर्म आसे ता संगे बाइंड करू से ओवम दा संगे जो स्पीशीज रो ओवम दा अछि से स्पीशीज रो ओवम दा ही आसे तार रिसेप्टर संगे बाइंड करू बोली ए जिंसरा को एंश्योर करची ZP3 तो एज सुन एज मानकर एडी आसेला गोटे स्पर्म रे आसे ए रिसेप्टर रे बाइंड हे गला पर एज सुन एज इट बाइंड्स ओवम कोन करबो ना रिलीज करबा आरंभ करबो कॉर्टिकल्स हैला कॉर्टिकल्स जोड़ा कि हमर जाइगिरी ZP3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देबो the corticals block these ZP3 receptors due to which no more sperm can bind with the receptor as a result of which we can prevent polyspermy दी प्रकार पॉलीस्पर्मी रा हमर कंडीशन अछि गोटे हला फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी गोटे हला स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी ए जो पॉलीस्पर्मी डा को हमें प्रिवेंट करिले ना हमें हला एडा को जाउची स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी एडा ह्यूमन मानक केस रे देखा जाय स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी एडा ह्यूमन मानक केस रे देखा जाय आ गोटे अछि फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी एडारे कोन होउची देखो एडारे कोन होउची ना ओवम अछि ओवम रो भीतर वाल दा हमर नेगेटिव अछि भीतर मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव अछि बाहर मेम्ब्रेन पोटेंशियल दा पॉजिटिव अछि हैला जत्ते बेले एमिति स्पर्म एंटर करि जाउची ना भीतर को ताले हमर उल्टा हे जाउची चार्ज रो चेंज हे जाउची चार्ज टा पॉजिटिव चार्ज भीतर को आसी जाउची और नेगेटिव चार्ज टा हमर बाहर पोटेंशियल रे नेगेटिव मेंटेन हे जाउची ठीक अछि बाहर पोटेंशियल रे नेगेटिव मेंटेन हे रहउची तो एडी जो चेंज हला ना द शिफ्ट ऑफ चार्ज ये कौन करला एडा को डीपोलराइज कर देला
आउ डीपोलराइज करबा अवस्था रे आ कोनोसी भी स्पर्म आ एंटर करि परिबनी से वाल एटा को कहा जाउची फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी आ ये जो फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी ना आम केस रे देखा जाएनी एटा सी अर्चिन केस रे देखा सी अर्चिन केस रे देखा जाए बाकी स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी एटा कॉमनली हमर मैमेलियन केस रे देखा जाउची हेगला बुझी पारलो केमिदी हमर पॉलीस्पर्मी ब्लॉक केमिदी काम करूची हला जोना पेलुसिडा होची गोटे ए सेलुलर लेयर ता जोना पेलुसिडा इज अ लेयर जोड़ा की सेल्स रे बनी नथे ताले कोथरे बनी थाए ग्लाइकोप्रोटीन्स रे बनी थाए हला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 the chromosome number in the secondary oocyte produced after the completion of the meiosis 2 in the human is diploid with 46 chromosome, haploid with 23 chromosome, triploid with 69 chromosome, tetraploid with 92 chromosome. Good morning, Bhavesh. V, V, fire, Trupti, V, yes, haploid. ठीक ଅଛି ଆମେ ତ spermatogenesis discussion କରି ସାରିଛେ spermatogenesis discussion କରି ସାରିଛେ ତ I hope ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କର ଏବେ clear ଅଛି question number 17 the interstitial cells located between the seminiferous tubules are important because they store sperms temporarily produce seminal plasma secrete androgen carry out meiosis interstitial cells सी secret androgen है ना यदि हमें टेस्टिस स्ट्रक्चर टा देखिया टेस्टिस स्ट्रक्चर टा गोटे देखिबा से भीतर अछि कोन ना टेस्टिकुलर लोब्यूल भीतर अछि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैला से टेस्टिकुलर लोब्यूल भीतर हैला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भीतर अछि सेटोली सेल आउ ए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रो चारि पटे एडी अछि हमर इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेटिस सेल बोली कहै छै है ना सी हमर रिलीज करछे कोन ना एंड्रोजन androgen in case of male is called as testosterone है ना सटोली सेल्स को हमर सस्टेंटाक्युलर सेल्स बोली मध्ये कुआ जाउची बा नरिशमेंट सेल्स बोली कुआ जाउची नर्व सेल्स बोली कुआ जाउची जोडा कि डेवलपिंग स्पर्म को से नरिशमेंट प्रोवाइड करूची है ना एंड सीक्रेट एंड्रोजन्स क्वेश्चन नंबर 18 which extra embryonic membrane in the mammal contributes significantly to the placenta formation through the chorionic villi amnion yolk sac chorion allantoic cavity chorion शिवसुंदर प्रियरंजन अभिप्सा it will be chorion हैला it will be chorion ठीक अछि yolk sac ता storage ପାଇଁ ବୋଲି helpful बाकी हमर स्टोर एठी किछि मोनी ह्यूमन मानक केस yolk sac गोडा को बहुत हाईली रिड्यूस है सेति ପାଇଁ ବୋଲି हमर एलेसिकल प्लासेंटा बोली कुआ जाउची बिना yolk sac रे या फिर बहुत ही मिनिमम अमाउंट रो yolk sac प्रेजेंट amnion ये हमर रिड्यूस करछ फ्रिक्शन reduces friction हैला और allantoic cavity रा हमर एक्सक्रीशन ପାଇଁ ବୋଲି हैला एक्सक्रीशन ପାଇଁ ବୋଲି help next question number 19 the movement of the spermatozoa from the seminiferous tubule into the retitestis and then into the vasa efferentia finally reaches the epididymis ureter prostate gland Cowper's gland
कौन हम एटा रूट मैपटा कौन सेमिनिफायस ट्यूब्यूल से तापर ओपन होची रेटे टेस्टिस को से पुणी ओपन होची वासा एफरेंशिया को हैला वासा एफरेंशिया पुणी ओपन होची एपिडिडाइमस को एपिडिडाइमस रो पुणी जाउची वास डिफरेंस को तापर जाउची यूरेथ्रा माने हां यूरेथ्रा ठीक अछि तो हमर वासा एफरेंशिया पर कोन अछि एपिडिडाइमस रे हमर स्टोरेज and maturation storage and maturation of sperm occurs storage and the maturation of the sperm occurs hela 19 दा a hobo 19 दा a hobo hela ठीक अछि next question number 20 which phase of the menstrual cycle is associated with repair and regeneration of the endometrium under the influence of estrogen बट इसे पचारछि कि हमरा वंस मेंस्ट्रुअल साइकिल गोटे थरा हे गला पर ब्लीडिंग फेज फर्स्ट हे गला पर पुनी जो रीजनरेट होची एंडोमेट्रियल लाइनिंग दा को फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल रे सेटा होची हैला पूनम हां ठीक अछि वेरी गुड 20 टा सी बी शुभ सी शिखा शुभ बी सी काहे एटा कंफ्यूजन होची कि बी सी काहे होची सब कंफ्यूजन देखो हमर मेंस्ट्रुअल साइकिल रो केतरा फेज अछि फर्स्ट 1 टू 5 डेज जे हला कोन मेंस्ट्रुअल फेज बा ब्लीडिंग फेज बोली कहा जाउछ ब्लीडिंग फेज बोली कहा जाउछ हला तापर 14th रे होची हमर ओव्युलेटरी फेज बा एडी ओव्युलेशन होची ठीक अछि तापर 6 टू नेगरी 13 डेज जाए हला एडी कोन होची ना फॉलिकुलर फेज बोली एडा काई कोआ गला फॉलिकुलर फेज बोली एडा एथ पे कोआ गला काहे ना एडी फॉलिकल्स रो डेवलपमेंट होची फॉलिकल्स रो ग्रोथ होची ठीक अछि आल्सो आउ कोन भी कोआ जाउची एडा को हमर प्रोलिफरेटिव फेज बोली मले कोआ जाउची काहे कि ना एडी एंडोमेट्रियल लाइनिंग रो प्रोलिफरेशन भी होची एंडोमेट्रियल लाइनिंग दा हमर एमिदी ग्रो भी धीरे धीरे करे जाउची हैला अच्छा ए फेज टारू ता पर को जदी पळे आसी बा 15 रु नेगरी 28 दे जाए हैला 15 रु नेगरी 28 दे जाए एडा को आगला कोन ना ल्यूटियल फेज या फिर अब आउ को को जाउची सेक्रेटरी फेज बोली मध्ये को जाउची ल्यूटियल फेज काहे को आगला काहे ना ए जगह रे हम कॉर्पस ल्यूटियम दा हमरा अटेन हे जाउची इस स्टेज आउ सेक्रेटरी फेज बोली काहे को आगला काहे ना एटी सी बहुत हाई लेवल रे सेक्रेशन करची कार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रो आ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रो हाई लेवल सिंथेसिस हेबा जो प्रोलिफरेशन हेतिला एंडोमेट्रियल लाइनिंग रो बे से प्रोलिफरेशन दा ग्लैंडुलर हे ए स्टेज रे ना ल्यूटियल फेज रे endometrium becomes more vascular and glandular माने endometrial lining दा हमर फॉर्म हे गिरी स्ट्रांग बनी की रहइबो हैला तो जदी बाय चांस प्रेगनेंसी हे जाय ताले सेटा को सही कंट्रोल कर परिबो हैला बाय कम बाय द secretion of progesterone है ना by secretion of progesterone done good morning next question number 21 the process by which sperm acquire fertilizing capacity inside the female reproductive tract is called ये तो इजी अच्छी ना ये तो इजी है एडा को हला कैपेसिटेशन क्लीवेज विषय रे देखिथिले गैस्ट्रुलेशन हला द फॉर्मेशन ऑफ germ layers सॉरी आ germ layers गुडा कोन अछि जेमिति कि एक्टोडर्म मेसोडर्म
एंडोडर्म, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. Relaxin hormone secreted during the late pregnancy primarily function to stimulate the ovulation, increase spermatogenesis, relax the pelvic ligament in cervix, prevent implantation. कौन होगा? Itishri C. Relax the pelvic ligaments and the cervix. Relaxin hormone जोटा कि हम प्रेगनेंसी पर प्लासेंटा ओवेरी थोड़ा बहुत रिलीज ही थाए हैला. से कौन करे एक्चुअली हम प्रेगनेंसी टाइम रे कौन ही थाउची ना ऑक्सीटोसिन हमर अधिकार अधिकार रिलीज हेगी मायोमेट्रियम रे थिबा तार रिसेप्टर्स ऊपर एक्ट करिकी कॉन्ट्रैक्शन से करी चलता होची. कॉन्ट्रैक्शंस को ये हमर करी चलता होची. बट ताकू वंस द बेबी इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी मदर रो बॉडी रो जते बेले हमर बेबी रा बाहरी आसु सेते बेले तो हमको से कॉन्ट्रैक्शन ना बंद करियो पड़िबो ना नले तो कॉन्ट्रैक्शन कंटीन्यूअसली चली थिबो ऑक्सीटोसिन रिलीज होउथबो तो सेटा को कंट्रोल करिया पई बोली ये कोन करछि रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होउछि से रिलैक्सिन हार्मोन कोन करछि ना जाईगिरी तार ऑक्सीटोसिन रो रिसेप्टर्स उडारे बसि जाउछि जहा द्वारा कि ऑक्सीटोसिन रो रिसेप्टर्स उडा को ब्लॉक ही जिबा जगु ऑक्सीटोसिन आ मात्रे कि तार फंक्शनिंग करिगिरी देखै पारु नाही है ना. तो जहा द्वारा पेल्विक लिगामेंट और सर्विक्स रे जो कॉन्ट्रैक्शन होउथला हमर ऑक्सीटोसिन रो सिक्रेशन जगु एबे सेटा रिलैक्स हो जिवो रिलैक्सिन रो सिक्रेशन जगु. Done. Done. Next 23. The human female, the layer of cells immediately surrounding the secondary oocyte and remaining attached even after ovulation is termed as corona radiata, germinal epithelium, theca externa, tunica albuginea. हाँ इतिश्री आज ओयूटी क्लास हवा गोटे रे हवा ठीक अछि गोटे रे हवा आज ओयूटी क्लास एक्चुअली इट वाज शेड्यूल्ड फॉर यस्टरडे बट वेदर कंडीशंस को देखि कि ताको के शिफ्ट करा ही आइछ आज पई है ना. आज गोटे रे हवा से क्लास 23 टा ए है ना 23 हवा ए कोरोना रेडिएटा ठीक अछि कोरोना रेडिएटा जोटा कि हम ग्राफिन फॉलिकल रे मते सराउंड करके प्रेजेंट थिला कि ओव्यूलेशन हला पर जेतल सेकेंडरी साइट रिलीज होछि से सेकेंडरी साइट संगे मध्ये हमर एटा फॉर्म हे जाउछि रिलीज हे जाउछि. एटा होछि क्वेश्चन नंबर 24. During pregnancy, the nutrient and gases exchange between the maternal and fetal blood occurs primarily through the कौन होगा? Yes, yes, it will be B, B, C. कौन बिलिया अम्बिलिकल आर्टरीज रे कंफ्यूज हो छबी आंसर सी हबो पिले हला अम्बिलिकल आर्टरीज हमर जो सेरा कोरियोनिक विली बोली कहै जाय जोटा कि तीनटा आर्टरीज रे हमर मिसिगिरी होउची और सेरा हमर कनेक्शन प्रोवाइड होउची बिटवीन द मदर एंड द fetus और हमर एक्सचेंज ऑफ द gases वा एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल हमर सेरा रे होउची हला बिली हबनी आर्टरीज हबो काहे ना अम्बिलिकल कॉर्ड हमर आर्टरीज रे मेड अप सही थी 25. Which part of the human sperm contain mitochondria arranged spirally to supply energy for motility? C. Actosomal region, neck segment, middle piece, tail filament.
सी शुभ यस सी तो एटा हे जीवो मिडिल पीस रे से स्पाइरल अरेंजमेंट देखौची स्पाइरली अरेंज हे अछि आ ए जो स्पाइरली अरेंज्ड मिडिल पीस टा एटा को ही हमर कोन को जाउ को टाइप रे अरेंजमेंट नेबेनकॉर्न अरेंजमेंट हला नेबेनकॉर्न अरेंजमेंट बोली रगु को जाउ सी नेक्स्ट असो 26 the acrosomal enzyme released by the sperm help in the acrosomal enzymes released by the sperm help in ଆଉ ମତେ ଏଇଟା ବି କୁହ ଯେ acrosome ର ରିଲିଜ କରୁଥିବା ଏନଜାଇମ ର ନାଁ ଗୁଡାକ କଣ କଣ acrosome ରିଲିଜ କରୁଥିବା ଏନଜାଇମ୍ସ ର ନାଁ ଗୁଡାକ କଣ ଖାଲି କଣ ହାଇଆଲୁରୋନିଡେଜ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କଣ ଅଛି ହେଲା ठीक 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 वेरी गुड एवरीवन हाइलुरोनिक एसिड जोनल लाइसिन एक्रोसोमल लाइसिन हैला एडा कुआ जाउची जोडा कि हमर एक्रोसोम रीजन रे हमर रिलीज हेगी अछि जोडा कि डिसॉल्व करबो एक मेम्ब्रेन को आउ फर्टिलाइजेशन रे से हेल्प करबो बेटर पेनिट्रेशन करि परिबो एक को सेति पे बोली एक्रोसोम रीजन रे ए जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स गुडा अछि सेटा पेनिट्रेट करि भीतर को जिबारे हेल्प करबो आउ हमर फर्टिलाइजेशन टा प्रॉपर्ली हेई परिबो सेति में बोली ए हार्मोन्स गुडा हमर ए जो एंजाइम्स गुडा हम सब एक्रोसोमल रिएक्शंस acrosome region रे अछि acrosome ता कोडी लोकेटेड अछि ना head region of the sperm head region of the sperm आउ एरा कोड डिराइव हेछि it is the modified Golgi apparatus modified Golgi apparatus हला next 27 कौन हम देख जदि पढ़ा ऑप्शन टा कौन देछि Sertoli cells are often referred to as nurse cells of the testis. They provide nourishment and structural support to the developing spermatogenetic cell. Spermatogenic cells. कहला ठीक अछि कि कौन ऑप्शन टा हबो according to this given assertion and reason? A शिवसुंदर इतिश्री हिमांशु बलराम पायल सौभाग्य हिमांशु तृप्ति राजलक्ष्मी ठीक अछि ए हला Sertoli cell versus tentacular cells ये हमर नर्व सेल भले रेफर करा जाउची काहे की रेफर करा जाउची काहे की ना सी नरिशमेंट दोची स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करूची फिजियोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करूची सब प्रकार सपोर्ट प्रोवाइड करूची जा द्वारा कि स्पर्म दा हमर मैच्योर इनफ हे पारुची सेरा रिलीज हेगरी जीवा क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 देखिला कौन हबो वॉइस सुबुनी राजीव तुमको एका सुबुनी ना का को भी सुबुनी जे देखो क्वेश्चन नंबर 28 assertion ovulation generally occurs around the 14th day of the 28th menstrual cycle reason the LH surge in luteinizing hormone induces the rupture of the Graafian follicle कौन हबो ए हबो हिमांशु टिके भल से देखिला सी हबो तो
सी हम तो जनरली हमरो ए रे रही था इसे ऑप्शन डा बोथ assertion and reason are true and reason correctly explains the assertion बोली किंतु एडी ऑप्शन नंबर सी रे दे दी तो ऑप्शन डा सेटा हबो हमरो माइंडसेट रे थाई जे ऑप्शन नंबर ए डा सेटा ता बोली ताको हमें मारी देके आसी जीवनी ए बोली ठीक अछि आंसर हे जीव एडी ऑप्शन नंबर सी मेक श्योर कि ऑप्शन सुडा हमरे पढी बतर 29 29 on the fertilization in the humans. Fertilization in the humans generally occurs in the uterus. Sperm and ovum commonly fuse at the ampullary ischemic junction of the oviduct. It's okay, Simanshu. Careful ରହିବ ହେଲା careful ରହିବ options ଗୁଡା ପଢିଲା ବେଳେ Amulya, good morning. ଏଟା କଣ ହବ question number 29 D both assertion and reason true हବ Itishri C ହେଲା Punam Himanshu ठीक ଅଛି assertion is false but reason is true कौन दीची reason sperm and ovum commonly fuse at the ampullary ischemic junction of the oviduct from fertilization the ampullary ischemic junction रे होची fertilization in the human generally occurs in the uterus रे नाइबा एठी होजबा ampullary ischemic junction रे होची है ना ampullary ischemic junction रे होची एडार ऑप्शन नै जो हमरा ऑप्शन नंबर सी 30 30 देखो एटा पूरा प्रॉपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना प्रॉपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना मु रीड कर दोची बिकॉज़ ऑप्शन नंबर 8 ता बोले तुमको क्लियरली विजिबल नुहे हैला तुम क्वेश्चन ता पढो मु भी संगे संगे पढी दोची ड्यूरिंग अ menstrual cycle multiple primary follicles begin development but only one reaches full maturity while others undergo atresia. The dominant follicle secretes increasing level of estrogens. What is the most appropriate explanation for follicular dominance? All follicles equally respond to FSH, but only one develop due to LH surge inhibition. Dominant follicle has higher sensitivity to FSH and secrete estrogen that suppresses the other follicles. Atretic follicles convert into the corpus luteum after the ovulation. Estrogen inhibits the growth of the dominant follicle, ensuring uniform follicular development. कौन होगा यस तृप्ति राजलक्ष्मी पायल सौभाग्य हिमांशु दिशि शिखा बी dominant follicles has higher sensitivity to FSH and is secret estrogen that suppresses the other follicles ହେଲା ठीक अछि बुझी की करलो तो क्वेश्चन ना बुझी पारलो तो कोन पचारले से हां जेतले हमर एट्रेसिया होउची किंतु गोटे फॉलिकल हमर एस्ट्रोजन लेवल जो से अधिका देखौची रीजन एक्सप्लेनेशन ता कोन ए गोटे फॉलिकल दा हमर आगो रिलीज हेबार कारण कोन काहेकि ना से गोटे फॉलिकल से जो डोमिनेंट थी बसी टिके हायर सेंसिटिविटी थी एफएसएच आडको जोटा कि बेटर लेवल रे एस्ट्रोजन सिक्रेट करि परची आ सी अन्य फॉलिकल्स को डेवलपमेंट को सप्रेस कर दोची निजर रही से फॉलिकुलोजेनेसिस को से एड करूची सबरो अधिक क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 A sudden surge of the LH occurs mid-cycle, leading to rupture of the mature grafting follicles and release of the secondary oocytes. Which of the following best explains the physiological role of the LH surge? Maintenance of the corpus luteum and inhibition of the progesterone secretion, induction of the completion of the meiosis 1 and rupture of the follicular wall for ovulation, suppression to FSH to prevent follicular growth permanently, conversion of endometrium into the decidual tissue before the fertilization. Good morning, Priyanka. Okay, yes, everyone. Be our
B, B, yes, B, yes, very good, very good. Hela, induction of the completion of the meiosis 1 and rupture of the follicular wall for the ovulation ए जिनसरा हमर LH search बुझौची LH search रा केबे होची ना टिपिकली हमर 14th day of the ovulation menstrual cycle रे होची हला menstrual cycle रे होची जा द्वारा कि एस्ट्रोजन रो लेवल बॉडी रे बढ़ी जाउची एस्ट्रोजन रो लेवल ला बॉडी रे बढ़ी जाउची as a result of which ovulation हो जाउची हला ovulation माने हला release of ovum from the Graafian follicle, release of ovum from the ovary. 32. After the sperm entry into the secondary oocyte, a cortical reaction occurs preventing the polyspermy. Which structural and biochemical event best describes this process? जो आमे slow block polyspermy कथा हेतिले कि ओवम रु हमरो cortical granules को सब रिलीज हबो cortical granules को सब रिलीज हबो आ cortical granule रा रिलीज हेगी ZP3 receptor रे जाएगी से ब्लॉक कर दबो ओ एग रो बाहरुची ZP3 receptor रे ब्लॉक कर दोची as a result of which अन्य sperm रे entry आउ हमर हेई पारुनी हला अन्य sperm रे entry हेई पारुनी option number A release of enzyme from the cortical granules modifies the zona pellucida to block further sperm entry fusion of multiple sperm nuclei inside the oocyte forming the polyploid zygote formation of secondary polar body preventing the implantation and D breakdown of the zona pellucida to allow multiple sperm penetration कौन बा A yes ठीक अछि A हला आ जदि हमें देखिबा एडा को प्रकार पॉलीस्पर्मी को बुझौची एडा हो जे हमर स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी रे ही हमर कॉर्टिकल रिएक्शंस होची हला स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी रे ही हमर कॉर्टिकल रिएक्शंस होची हला आ जदि जोना पेलोसिटा स्ट्रक्चर कथा कहबा ताले एडा होची गोटे ए सेल्युलर लेयर टा आ कोथरे मेड अप ऑफ एडा मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स है ना इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स नेक्स्ट 33 I have no idea Saini ITP पे काउंसलिंग टाइम बोले there are separate videos जोड़ा के अपलोड ହେଇଛି चैनल रे मोर सेमति किछि आईडिया ना देखो मैं क्वेश्चन पढ़ी दोची हां a fertilized human egg undergoes cleavage to form a morula and then develops a fluid filled cavity called the blastocyst forming a blastocyst. The outer layer differentiates into trophoblast while the inner cell mass forms the embryo proper. Which statement best describes the role of the trophoblast? It forms the embryonic body structures including all organs. Option B, it contributes to placenta formation and implantation in the uterine wall. Option C, it develops into fetal nervous system only. Option D, it remains inside blastocyst as reserved stem. Option C डाला कौन होगी? Option C डाला it develops into fetal nervous system only. Option D डाला it remains inside the blastocyst as the reserved stem. एटा हमारा option A और B तो मानो को visible अच्छी I guess. B yes से placenta form कुछ हला trophoblast एटा placenta form कुछ आउ सी ही हमर कोन करछि ना आपण बायोलॉजी केमिति मन रखंदी से प्रैक्टिस हे जे प्रियंका तमर भी हे जिवो तमे भी मन रखि परिबो देखो इट कंट्रीब्यूट्स टू द प्लेसेंटा फॉर्मेशन आउ सी ही हम जाइए हम इम्प्लांटेशन करी यूट्रस रो वॉल रे जाइए से अटैच की रहि पाछ हला देखो क्वेश्चन हमर एते बडटे देइछि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आसीबो एसोसिएशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आसीबो पिला जनरली डरी जानदी कि एते बड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस गुडा को केमिति सॉल्व करा हबो हला केमिति सेडा को हमें परफॉर्म करिबा बा केमिति सेडा को सॉल्व करिबा बाकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिबाटा बहुत इजी काहे ना तब से भितरे क्वेश्चन रो आंसर बाहर पाइबो हला सब्जेक्टिव बेसिस रे आसीबो जदी हमर टिके लेंथी क्वेश्चन जदी आसीबो नो डाउट मु मानुची एरा मध्ये एग्री करूची जे हमको टाइम टेकिंग लागिबो हला टाइम नियाती लागिबो हम स्टेटमेंट बेस्ड बड़ बड़ क्वेश्चन गुडा को सॉल्व करिया पे ना बिट बाय बिट पढ़ी की करिया पड़िबो बट एतिकी एश्योरेंस नियो जे सेरा हमरा कंपैरेटिवली इजियर सेरा हमरा इजियर अटेंड तो करि परिबो तमे बुझी द परिबो जिंसटा हला स्किप करिवोनी आ से जिंसटा को बुझिया पई बोली तमे पढियो बसी कि सेरा
और से पढ़िला भितर किछि ना किछि तो तुमको निहाती स्ट्राइक करियो हैला किछि ना किछि निहाती स्ट्राइक करियो 34 देखिलो ए देखा जाउची तो ऑप्शन नंबर सी जे देखा जाउची हां हां मु भी आपन पर बायोलॉजी रे प्रो हवा पई ट्राई करची ठीक अछि ऑल द बेस्ट प्रियंका किछि असुविधा नै सब ही परियो गुड मॉर्निंग चंद्र देखो क्वेश्चन a blastocyst reaches the uterine endometrium on day 6 to 7 post fertilization. The trophoblast secretes the enzymes that allow embedding into the uterine lining. Yes, implantation kotha koichi echi. And which of the following is the correct sequence of the implantation events? First, attachment, invasion of the endometrium, trophoblast differentiation, placenta formation. Cleavage, gastrulation, neurulation, implantation. Hala. C, ovulation, fertilization, menstruation, implantation. D, corpus luteum degeneration, blastocyst formation. After ovulation. कौन हबो पूनम पायल तृप्ति शुभ सौभाग्य शुभ ए ए ए इतिश्री राजलक्ष्मी ए यस इट इज फर्स्ट अटैचमेंट माने ब्लास्टोसिस्ट आसीबा फर्स्ट अटैच हबो तापर धीरे 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 इन्वेड करबा आरंभ करबो माने एटा जदी एंडोमेट्रियल लाइनिंग था एरा असला ब्लास्टोसिस्ट लागिबा पे हला धीरे 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 इन्वेड करबा आरंभ करबो इन्वेड करी तापर डिफरेंशिएशन माने होची सब ट्रोपोब्लास्ट सेल उडा को सेल दा आर्टरी जागी बनेबो यूट्राइन आर्टरी बनेबो को सेल जागी कॉर्ड बनेबो को सेल जागी को अन्य अन्य फंक्शंस रे से पार्टिसिपेट करबो से जिंसरा को डिफरेंशिएशन को जाउची सो जो डिफरेंशिएशन का ताकि हम एट देखिबो तापर असला प्लेसेंटा रा फॉर्मेशन तापर इन्वेट करला पर प्लेसेंटा फॉर्मेशन हे जीवो हैला प्लेसेंटा फॉर्मेशन हे जीवो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 देखो एरा मदर इजी एरा भी इजी क्वेश्चन नहीं देखिए ना a woman in early pregnancy shows persistently high progesterone levels despite the absence of ovarian cycle activity. This is due to the hormonal support from the early embryonic structures, which hormone is primarily responsible for maintaining the corpus luteum in the early pregnancy. Follicle stimulating hormone secreted by the anterior pituitary, HCG or human chorionic gonadotropin secreted by the trophoblast cell, oxytocin secreted by the posterior pituitary, prolactin secreted by the mammary glands. B हवा human chorionic gonadotropin HCG released by the trophoblast cells हैला trophoblast cell release होतबा HCG टा सेटा हमर कोन करबो ना मेंटेन करबो early pregnancy को आ corpus luteum को मेंटेन करबो फर्स्ट 3 मास जाय एटलीस्ट हमर corpus luteum ही मेंटेन करके रखे प्रेगनेंसी को हैला ता परे कोन होची ता परे हमर प्लासेंटा टेक ओवर कर दोची से कामटा ता परे प्लासेंटा टेक ओवर कर दोची से कामटा ठीक अछि अच्छा तो एचसीजी आ एचसीजी एते मात्रा रिलीज होची जे सी हमर ब्लड रे तो प्रेजेंट अछि ता संगे से हम यूरिन रे मदे रिलीज हेबार रही जाउची जोडा कि हम यूरिन टेस्ट करले एचसीजी रे लेवल को देखि के हम चेक करछे हैला आ केतरा आ 10 टा क्वेश्चन अछि आ 15 टा क्वेश्चन अछि 35 हैला 50 टा क्वेश्चन थिला 36 During pregnancy, the uterine endometrium undergoes transformation into a highly vascular and glandular structure to support the embryo development. What is the correct term for the modified endometrium? कौन हम प्रेगनेंसी हला परे
एंडोमेट्रियम डा हला एंडोमेट्रियम डा हमर हाईली वास्कुलर और ग्लैंडुलर हो जाउची सेतेबे एंडोमेट्रियम डा ना हमर टिके स्ट्रक्चर टा अलग प्रकार थाए से जो स्ट्रक्चर टा जो एंडोमेट्रियम रो स्ट्रक्चर टा फॉर्म होची जोटा कि एम्ब्रियो रो डेवलपमेंट को सपोर्ट करि परिबो से जो स्ट्रक्चर रो नाटा कोन से जो एंडोमेट्रियम रो लाइनिंग रो नाटा कोन सिद्धार्थ बी is it decidua is it decidua everyone decidua C गायत्री myometrium myometrium डा पा हमर स्मूथ मसल्स रे मेड अप स्मूथ मसल्स रे मेड अप जोड़ा कि हमर यूट्राइन कंट्रैक्शन कॉज करिया पे बोली रिस्पांसिबल हैला अच्छा पेरिमेट्रियम डा होची आउटर लेयर टा myometrium टा तो मिडिल लेयर एरा होची डेसिडुआ कहा गला हैला ए प्रोसेस टा कोन कहा जाउची डेसिडुआ लाइजेशन decidualization बोली कहा जाउची ए question number 37 in a normal menstrual cycle several follicles begin maturation but only one becomes dominant while other degenerate what is the most accurate explanation for the follicular atresia lack of LH causes degeneration of all follicles simultaneously reduced FSH stimulation leads to apoptosis of the non-dominant follicles excess progesterone causes degeneration of the graphene follicles high estrogen levels cause universal follicle maturation cause universal follicle maturation. B. B. Reduced FSH stimulation leads to the apoptosis of the non-dominant follicles. Apoptosis रो माने कोन? ए टर्म रो माने हैला programmed cell death. Programmed cell death. हैला FSH level कमी जिबा जगु follicles रा regeneration न होई atresia होची non-dominant follicles गुडा को सब हमरा degenerate हो 38 38 रोजालिन ठीक होची देखो 38 कौन कही a blastocyst shows differentiation into the inner cell mass and trophoblast the inner cell mass later forms the embryo proper which of the following is the correct regarding inner cell mass it forms placenta and embryonic membrane only it differentiates into all tissues of the developing embryo it degenerates after implantation it forms only the amniotic fluid question रे जोड़ा देइछि ना सेडा ही आंसर रे अछि ताकू नै ही आंसर टा हबो किछ अलगा हबोनी बी यस बी देखिला इजी अछि तो से लिखि भी दीची क्वेश्चन देखि तो हमर जते ब्लास्टोसिस्ट इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म होची इनर सेल मास ता हमर एम्ब्रियो प्रॉपर बनउची तो इनर सेल मास को करेक्ट एक्सप्लेन कोन होची डिफरेंशिएशन इनटू ऑल द टिश्यूज ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैला एम्ब्रियो और ट्रोफोब्लास्ट सेल कोन फॉर्म करची एरा हमर प्लासेंटा फॉर्म करची हैला और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज रे ब्लास्टोसिस्ट is characterized by the presence of a fluid filled cavity by the presence of the fluid filled cavity एटा कहला कोन ब्लास्टोसील हैला ताको कहला ब्लास्टोसील
एडा को मन रखिबो कोन जेमेरी हेले भी हैला। क्वेश्चन नंबर 39 पूरा इससे बड़ा हिची ना क्वेश्चन पूरा इससे लिखिला बड़ा हिची करो आराम आराम से पढ़ी पढ़ी गिरी करो देखो microscopic examination of the testicular tissue shows highly coiled structures lined by germinal epithelium along with the supporting Sertoli cells. Between these structures are the clusters of the endocrine cells. This statement correctly describes these components. Seminiferous tubule produce testosterone while Leydig cell produce sperm. Seminiferous tubule produce sperm while Leydig cell secrete testosterone. Option C also Sertoli cell produce testosterone and Leydig cell produce support spermatogenesis. कौन होगा कहलो ऑप्शन ए बी भीतर ही अछि तमे आ सी आडू जाओ सी आडू आउ जाओनी ए बी भीतर ही अछि ए शुभश्री बी हिमांशु बी पूनम है ना बी वेरी गुड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जोड़ा को कि हमें साइट ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस बोली मध्ये कहू साइट ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस बोली मध्ये कहू सी हम स्पर्म प्रोड्यूस करूची आ जे लेडिक सेल्स जोड़ा कि हमें इंटरस्टिशियल सेल्स बोली मध्ये कहू है ना सी हमर कोन रिलीज करची एंड्रोजेन्स रिलीज करची आ एंड्रोजन इन केस ऑफ मेल is called testosterone na question number 40 a male patient after vasectomy still shows the presence of sperm in the proximal reproductive tract but no sperm in the semen which is the most appropriate explanation for the epididymis function. It produces sperm and stores them temporarily before ejaculation. It is the site of sperm maturation and acquisition of the motility. It secretes seminal plasma that nourishes the sperm directly. It is responsible for the testosterone synthesis and regulation. देखो testosterone synthesis and regulation में हमारा epididymis करूनी particular इडा secretes seminal plasma तो seminal vesicle release कला ना तो nourishment to the sperm directly seminal plasma रे secretion करेगी इडा मध्य epididymis करूनी है ना. It is the site of sperm maturation and the acquisition of the motility. Yes है ना yes इडा हवा आंसर है ना एटा काहे हबनी आंसर कहलो एटा काहे 40 ए काहे हबनी काहे ना ये प्रोड्यूसर स्पर्म लिखि प्रोड्यूस कोन हमर एपिडिडाइमिस रे होची नी हैं ए जो समस्त कहउछ सुनो ए प्रोड्यूस हमर एपिडिडाइमिस रे होची की प्रोडक्शन तो हमर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रे हैला ना से हमको एडी एट्रो माने एपिडिडाइमिस को बुझेछ प्रोड्यूसर्स हबनी एटा हैला stores them temporarily before ejaculation is the correct statement correct जोड़ा दिया है ना किंतु प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म ए जो स्टेटमेंट देला है एटा को से एट भूल करता है ना ऑप्शन बी है जिबो तो आंसर राजी तो ये हमर स्पर्म रो स्टोरेज करूची मैच्योरेशन करूची और मैच्योरेशन एमिति करूची सो दैट स्पर्म ना मोटिलिटी गेन करि पारिबो स्पर्म प्रॉपर मैच्योरेशन गेन करि पारिबो आउ तो हमर प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टेस्टिस रे वैसेक्टोमी गोटे पर्सन रे जदी करा ही जाई ताले टेस्टिस रो प्रॉक्सिमल एंड रे जोडरे के एपिडिडाइमिस एडा सब अछि से जगह स्पर्म दा फाउंड किछ असुविधा नै हैला किंतु सीमेन रे स्पर्म दा नॉट फाउंड ऑब्वियसली काहे ना वास्ट डिफरेंस ता काटी दिबा कटाई जिबा जगु से स्पर्म दा पास करके हम यूरेथ्रा रे मिसी के जो इजैकुलेशन से जो सिक्रेशन सोडा को संगे मिसी के बाहर ही पारिलानी हैला बाहर ही पारिलानी सीमेन रे हम स्पर्म देखा जाउनी सतो किंतु बेसिक हमर जो प्रॉक्सिमल एंड टेस्टिस रे देखा जाउ स्पर्म ठीक अछि सॉरी इट्स ओके भूल करिबार अछि एठी कर ठीक अछि किछ असुविधा नै नेक्स्ट बट केयरफुल रहइबो एग्जाम में a histological slide of ovary shows follicles at the different stages including primary follicles secondary follicles and a large Graafian follicle with fluid filled antrum which structure is directly responsible for the estrogen secretion during the follicular phase corpus luteum after ovulation granulosa cells for developing follicles ovarian medulla containing blood vessels zona pellucida surrounding the oocyte कि हम एस्ट्रोजन सिक्रेट करछि जोड़ा कि हमर फॉलिकुलोजेनेसिस बा oogenesis करिया रे हेल्प करबो
Hi Sangeeta, good morning. मैम ओयूएटी वीडियो हाँ बबीता आज आज 1 o'clock रे ओयूएटी बोली क्लास शेड्यूल होइछि बायोटेक्नोलॉजी ऊपर ठीक अछि आज आरंभ होइछि बी आज आज हबो 1 o'clock रे हबो ठीक अछि बी यस ग्रानुलोसा सेल्स ऑफ द डेवलपिंग फॉलिकल जो ग्रानुलोसा सेल्स गुडा हमर जो फॉर्म होइता होछि माने हमर एडी गोटे एग हला ता ऊपर लेयर रे एंटी ग्रानुलोसा सेल्स गुडा था होछि से ही हमर इफेक्टिवली एस्ट्रोजन रिलीज कर दोछि से ही इफेक्टिवली एस्ट्रोजन रिलीज कर दोछि ठीक अछि बी हे जिवो करेक्ट वेरी गुड 42 an ectopic pregnancy is detected in a female patient where the embryo is implanted in an abnormal site of the reproductive tract. Which region of the female reproductive system is the most commonly associated with fertilization and also ectopic implantation? Cervix due to narrow passage and mucus secretion. Ampullary region of the fallopian tube where fertilization usually occurs. Endometrium of the uterus where implantation is always normal. Ovarian cortex where ovum is released and fertilized. Ovarian cortex को तो छाड़ो ovary को था ऐसे वाला नहीं ये तीनटा ऑप्शन को था देखिए पहले बी हिमांशु सौभाग्य कोड़ा कौच 41 42 टा कौन हो बी बी यस से पचार को स्ट्रक्चर टा हम फर्टिलाइजेशन सहित हमर एसोसिएटेड एम्पिलरी स्टमक जंक्शन आउ जते बेले यूटेरस को छाड़ी की एंडोमेट्रियम को छाड़ी की आउ कोन सी जगह रे जदी इम्प्लांटेशन हेई जाउची से केस को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोली कहूचे आउ से प्रकार प्रेगनेंसी टा हमर कंटिन्यू होएनी सस्टेन करेनी हला हमर फर्दर हमर ग्रो करी गिरी सी हमर मेंटेन हेकी रहइबनी कि से प्रेगनेंसी टा सक्सेसफुल हबनी सेति में ताको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोली कहवा गला आउ जदी हमर फैलोपियन ट्यूब रीजन रे एक्चुअली से जाई हमर एंडोमेट्रियस रे एंडोमेट्रियम लाइनिंग रे जाई इम्प्लांटेशन हेबा कथा किंतु जदी ये जाईगिरी आउ कोन से मानकर एम्पुलर रीजन फैलोपियन ट्यूब एम्पुलर रीजन रे इम्प्लांटेशन हे वाला हैला से केस से प्रेगनेंसी का हमर सक्सेसफुल हे परिबनी खाली नॉट ओनली प्लस फैलोपियन ट्यूब नॉट ओनली फैलोपियन ट्यूब जदी फैलोपियन ट्यूब न हे गिरी मध्ये हमर जो कॉर्नर गुडा गो हैला ये हमर ए जो कोन से सर्विकल लाइनिंग सर्विकल म्यूकस लाइनिंग तार ओपनिंग रे जदी मध्ये इम्प्लांटेशन हे जाय ताले मध्ये हमर प्रेगनेंसी सस्टेन करि परिबनी कि कंटिन्यू करि परिबनी 43 The uterus consists of three layers: outer serosa, middle muscular layer, and inner glandular lining. During pregnancy, one layer undergoes significant hypertrophy to support the fetal growth. Which layer is primarily responsible for the uterine contractions during the childbirth? देखो ये तो यूट्रस कथा कहि कि से खाली से निजे निजे सब गुडा को लेयर रो एग्जांपल एक्सप्लेनेशन गुडा को देई सब गुडा लेयर रो एक्सप्लेनेशन गुडा को देई तापर लास्ट को क्वेश्चन पचारला कोन which layer is primarily responsible for the uterine contraction during the childbirth तो हबो बी सी बी yes it is b myometrium myometrium composed of smooth muscle fibers myometrium which is the middle layer which is the middle layer this is responsible for the smooth muscles of contraction है ना ये middle layer टा myometrium टा हम smooth muscles से made up of smooth muscles in general it is involuntary in nature involuntary in nature ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ଏ ଲେୟର ରେ ହିଁ ଆମର ଅକ୍ସିଟୋସିନ ର ରିସେପ୍ଟର୍स ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଅକ୍ସିଟୋସିନ ର ରିସେପ୍ଟର୍स ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ହେଲା जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स गुड़ाक कि हमर ऑक्सीटोसिन आसी बाइंड करला पर कंट्राक्शन को इनिशिएट करेबो सेहि बेन बोलते ऑक्सीटोसिन को हमर बर्थ हार्मोन बोली मते कहै जाउछि कंट्राक्शन इनिशिएट करके पार्चुरेशन करउछि सेहि बेन हैला नेक्स्ट 44 44 A male reproductive system examination shows normal testes and ducts but reduced seminal volume due to the dysfunction of a gland that contributes
fructose rich fluid to semen. Which gland is most likely affected? Seminal vesicle providing energy rich fructose to sperm, prostate gland producing alkaline secretion for sperm activation, bulbourethral gland secreting mucus for the lubrication, epididymis storing mature sperm cells. देखो से पचार कौन ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे जते आमे एग्जामिनेशन करके देखिलु तार टेस्टिस गुडा नॉर्मल अछि आ डक्ट्स गुडा भी नॉर्मल अछि किंतु सेमिनल वेसिकल बहुत कम अछि सेमिनल वॉल्यूम बहुत कम अछि हला कम पे कम अछि काहे सेमिनल वॉल्यूम जो ग्लैंड रिलीज होतला से ग्लैंड टा में भी किछि डिसफंक्शनिंग हो जाइथिबो हला से ग्लैंड टा किछि डिसफंक्शनिंग हो जाइथिबो तो सेमिनल वॉल्यूम टा हमर को ग्लैंड रो रिलीज होतला को ग्लैंड रिलीज होतला सेमिनल वेसिकल रिलीज होतला ना सेमिनल वेसिकल्स तो रिलीज होतला ना तो ये ऑप्शन नंबर कौन होगा कोडी अछि सेमिनल वेसिकल कथा सेमिनल वेसिकल्स प्रोवाइडिंग एनर्जी रिच फ्रुक्टोज टू द फॉर्म्स ये ऑप्शन नंबर ए हला तो ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 during pregnancy a protective barrier forms in the cervix that prevents the entry of the pathogens into the uterus what is the primary structural basis of this protection thick keratinized epithelial lining of the cervical canal, formation of mucus plug secreted by the cervical glands, continuous contraction of the cervical smooth muscles, development of the placental tissues in the cervix. तो हम 45 टा बी बी हिमांशु इतिश्री ए करो सी हाँ बी है ना बी yes formation of the mucus plug secreted by the cervical gland सी हमरो कौन से भी पैथोजन को यूट्रस को एंटर करियर से प्रिवेंट करो है ना good 46 during examination a physician identifies a highly vascular erectile tissue structure in the female external genitalia that plays the role of the sexual arousal. Which structure is being described? Clitoris containing erectile tissue homologous to penis, labia majora functioning as the primary reproductive canal, cervix acting as external genitalia opening, Bartholin's glands producing ovum during the ovulation. During the ovulation. कौन होगा? Erectile tissue found है ला. तो female reproductive tract erectile tissue टा कौन हो? ये erectile tissue टा कौन हो? Everyone? कौन हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे इरेक्टाइल टिश्यू टा कौन हम क्लिटोरिस आ क्लिटोरिस टा कोडी अछि इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा ठीक अछि सिया ता पाखरे हमर इरेक्टाइल टिश्यू अछि ता पाखरे हमर इरेक्टाइल टिश्यूज अछि हला यस क्वेश्चन नंबर 47 a patient with undescended testes shows reduced sperm production due to abnormal temperature regulation. What is the primary function of the scrotum in the male reproductive system? Protection of the testes from mechanical injury only, regulation of testicular temperature for the optimal spermatogenesis, production of the testosterone and inhibin hormones, storage of the mature sperm until ejaculation. So, माने scrotum रे दरकार कोन पई काहे कि हमर testis टा extra abdominal cavity रे located extra abdominal cavity located. How kind extra abdominal cavity located? Because it requires 2 to 3 degrees Celsius, 2 to 3 9, 2 to 3 9. It is 2 to 2.5. According to the NCERT Jivamina, 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal body temperature. Normal body temperature for spermatogenesis. आउ से जो टेस्टिस टा बाहर लोकेटेड अछि से गोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर रे हमर हेल्ड है बाय हेगी रहउची से स्ट्रक्चर टा कोआला स्क्रोटम व स्क्रोटल स्टैक कि हमर टेंपरेचर रेगुलेशन रे भी हेल्प होची बाहर रखी टेंपरेचर जोड़ा स्पर्मेटोजेनेसिस में दरकार हैला स्पर्मेटोजेनेसिस में बली दरकार सेति से मेंटेन होचा स्पर्मेटोजेनेसिस
स्पर्माटोजेनेसिस टाइम पे केते टेम्परेचर दरकार लोअर देन दी केते लोअर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन दी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 the vaginal canal is lined by stratified squamous epithelium and remains moist due to the secretion from the surrounding glands. What is the most important function of the vagina in the reproduction? Production of ova and hormonal regulation, passage for sperm deposition and birth canal, site of fertilization of the ovum by the sperm, storage of the developing fetus during the pregnancy. Question number 48. Pranam Swabiman. Listening to the winners. Vaginal canal ର କାମ କଣ ବାସ୍ ସେତିକି ତ production of ova and hormonal regulation ଏଟା ବା ovary କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ଏଟା ହବନି passage of sperm deposition in birth canal ଏଟା ହବ site of fertilization of the ovum by the sperm ଏଟା ହଉଛି ampulla of isthmus ampulla of fallopian tube है ना storage of the developing fetus during the pregnancy एटा uterus रे होଉଛି next 49 a pregnant woman in her 9th month experiences rhythmic uterine contraction that progressively increase in intensity and frequency cervical dilation begins and the fetus starts exerting pressure on the cervix this triggers a neuroendocrine reflex mark karo eta neuroendocrine reflex leading to further uterine contraction what best explains the mechanism of this positive feedback loop कौन हम एटा को मो आंसर कहि दउची पिले हैला ना एटा बहुत लेंदी अछि ठीक अछि लेंदी अछि आई गेस तमान को देखा भी जीवनी तळर ऑप्शन गुडा को ए आ बी ऑप्शन भितरे ही दीटा हबो ए आ बी ऑप्शन भितरे ही दीटा हबो ठीक अछि एडी हमर प्रोजेस्टेरोन आ एडी लैक्टोजन कथा कहिची तो ए दीटा तो हबनी सी आ डी तो हबनी हैला एटा देखि दियो डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल्स इनहिबिट यूट्राइन सेंसिटिविटी लीडिंग टू द ग्लैंडुलर लेबर इनिशिएशन cervical stretch stimulates the hypothalamus leading to the oxytocin release from the posterior pituitary enhancing the uterine contractions कौन हम बी हम तो इतिश्री सौभाग्य बी हम से हमर न्यूरोएंडोक्राइन रिफ्लेक्स जोटा को कि हमें कौन fetal ejection रिफ्लेक्स बोली कहू जा द्वारा हमर ऑक्सीटोसिन रिलीज ता हमर कंट्रोल हो पाछ ऑक्सीटोसिन रिलीज ता इनिशिएट हो पाछ क्वेश्चन नंबर 50 A stretch receptor in the cervix sends signals to the hypothalamus when the fetal head presses against it. Fetal head presses against it बोली कहले से का को सिग्नल देला hypothalamus को सिग्नल देला का विषय कथा हेले एडा से न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स कथा हेले हला न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स कथा हेले या फिर एडा को ही हमर कहआ जाउची कोन एडा को ही हमर कहआ जाउची एज दी हार्मोन को जो fetal ejection reflex बोली कहा जाउची सॉरी ejection reflex हला जा द्वारा कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होछ cervical stretch hypothalamus stimulation posterior pituitary release oxytocin uterine contraction बस सिंपल ए इतिश्री हिमांशु अब तो हला एतिकी हमरा ये हे जे ठीक अछि अच्छा तो समस्त पिले क्वेश्चन तो हमर इडी शेष हो गला हैला समस्त इडी त माने टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हे जिवो हैला जो जो क्वेश्चन थोड़ा ना बहुत लेंदी थिला टी क्वेश्चन थोड़ा को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा को टी लेंदी थिला हैला से क्वेश्चन थोड़ा त मानन को क्लियरली विजिबल हे नथिबा आई एग्री विथ दैट से क्वेश्चन थोड़ा तमे टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हे जिवो मु ए पीडीएफ ता संगे संगे त मानन को शेयर कर देबी सेरा को तमे संगे संगे टी आउटर गो थ्रू हे जिवो हैला जोड़ा तक जो क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर उडा के हमें मार्क करि दैछे सेरा मार्क हे गेते त माने देखि परिबो किंतु जो अन्य ऑप्शन थोड़ा को अछि से ऑप्शन थोड़ा करो आ कोन कोन क्वेश्चंस बनि परिबो सेही जिंस मते तमे एनालिसिस कर परिबो ठीक अछि तो थैंक यू एवरीवन आई होप आज रो क्लास तमान पे बिल हेल्पफुल रहिबो कोनी देखा होबा हमें आउडे क्लास रे आउडे किछरा क्वेश्चंस आ आउडे किछरा टॉपिक रो डिस्कशंस करबी हैला सो थैंक यू सो मच एवरीवन डू वेल प्रिपेयर वेल भलसे पढा पढी करू थाओ सी यू नेक्स्ट टाइम थैंक यू सो मच जय जगन्नाथ